Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. In this video, I'm going to talk about OICL recruitment. We are going to have a discussion on the previous year vacancies, previous year recruitment and the cutoff in those recruitment. This will give you an idea of what marks you should target in OICL EU this time recruitment. I have come to know about two recruitments, one in 2015 and another in 2017. After 2017, the recruitment has come now in 2024 after 7 years. In 2015, there was only one written exam and then there was interview. Recruitment was announced in February. The exam was in May. On 3rd of May 2015, the exam was there and there were 44 legal vacancies. There was one online exam and then there was interview. तो हम डिटेल में 2015 की कट ऑफ नहीं देखेंगे. Coming to 2017, recruitment was announced in August. The phase 1 was in October, 22nd October को phase 1 था और 18th November को phase 2 था. phase 1 और phase 2 में hardly 1 month का time था and if you see from the notification 2 months का time था for the phase 1 exam. In 2017 there were 30 legal vacancies. 2017 and 2024 का recruitment pattern बिल्कुल same है तो हम 2017 की cut off को थोड़ा डिटेल में देखेंगे. Now coming to this year recruitment, आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम मार्च 21 मार्च एंड विल लास्ट अप टू 12th ऑफ अप्रैल. एग्जाम इज एक्सपेक्टेड इन मे और जून. सो आई एम एक्सपेक्टिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ मे आपका एग्जाम हो सकता है. इलेक्शंस की वजह से हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए. इन लीगल देयर आर 20 वैकेंसीज दिस टाइम. कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न, 2017 में phase 1 was prelims and there was English, reasoning and quantitative aptitude. Exactly the same pattern as we have seen in 2024 recruitment. Sectional cutoff थी, overall cutoff भी present थी. And this was the cutoff, sectional cutoff and overall cutoff. Here if you see sectional cutoff for legal for unreserved category, in English it was 4.25, in reasoning it was 1.5 and in quantitative aptitude it was 2.5. Well, ये 7 साल पुरानी बात है तो हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट कर सको. Look at the cutoff of NIACL which I have discussed in my previous video. उससे आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा. एटलीस्ट उतने मार्क्स टारगेट कर लेना. यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ तो बहुत ही कम गई थी इन प्रीलिम्स. इन लीगल प्रीलिम्स में ओवरऑल कट ऑफ 9.5, 6.25, 6.25, 9.5 इस तरीके से गई थी. 2023 में NIACL AO की रिक्रूटमेंट आई थी. उसका एग्जाम पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम है. उसमें प्रीलिम्स की कट ऑफ 45.75 के अराउंड गई थी. इसको अपना बेस मत लेना. 10 कट ऑफ तो नहीं जाएगी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी. इट विल गो समवेयर अराउंड 50 प्लस माइनस फ्यू मार्क्स. तो उतना स्कोर आपको प्रीलिम्स में करना ही होगा. दिस वाज द फर्स्ट टाइम द पैटर्न चेंज. QRE was introduced in prelims. हो सकता है इस वजह से 2017 में कट ऑफ इतनी कम गई हो, बट अब 7 साल आगे आ चुके हैं. कंपटीशन भी बढ़ गया है. द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड. दे हैव आल्सो बीन कंसिस्टेंट इन गिविंग मेनी एग्जाम्स. सो रेस्ट श्योर्ड यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगी, उतना आपको टारगेट करना होगा. Coming to phase 2, phase 2 is also exactly the same. For specialists you have 5 subjects, QRE, GA and then professional knowledge. हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस हैं, 2 hours का पेपर है. देन यू हैव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका फिर से क्वालिफाइंग की है. Let's look at the phase 2 cutoff. Sectional cutoff for legal in phase 2 was 8 in all the subjects. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हर सब्जेक्ट में 40 में से 8 सेक्शनल कट ऑफ गई है. रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, GA, फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब में 8. डिस्क्रिप्टिव में सेक्शनल कट ऑफ वाज 8 इन एसे राइटिंग एंड 4 इन लेटर राइटिंग. ओवरऑल टोटल डिस्क्रिप्टिव में कट ऑफ थी 12 आउट ऑफ 30. नाउ लुकिंग एट द ओवरऑल कट ऑफ फॉर लीगल, कट ऑफ ऑन टोटल वाज for unreserved category 60.25, for ST also 60.25, for OBC 50.75 and for SC 52.5. तो इतनी कट ऑफ गई थी ऑफ phase 2 in OICL एग्जाम. आई एम अगेन सेइंग OICL और NIACL का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है और इस बार NIACL में मींस की कट ऑफ गई है 85.5 फॉर लीगल फॉर अनरिजर्व कैटेगरी. तो इतना तो टारगेट करना ही है. 200 मार्क्स में से आपको लगभग 95 to 100 मार्क्स टारगेट करके चलने चाहिए, एटलीस्ट 50%. देन ओनली यू विल फील सेफ इनफ टू क्लियर द phase 2 एग्जाम. एंड देन अगेन इंटरव्यू और phase 2 की वेटेज बताई हुई है. phase 2 80% वेटेज एंड इंटरव्यू 20 वेटेज. फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू. ये एग्जैक्टली सेम था. So this is a complete idea of the past year cutoff. To answer any of your queries with respect to this exam, to understand the preparation strategy,
किस तरीके से 2 महीने में प्रीलिम्स और उसके बाद 1 महीने में मेंस की तैयारी करें, कीपिंग दिस 3 months timeline in your head, how to manage time, how to prepare for OICL AO legal exam. This all we are going to discuss in this workshop. And if you have any other queries with respect to this exam or with respect to NICL AO means, that also I can take up in this workshop. So if you want to join this workshop, you will have to register using the link present in the description below. The workshop is on Thursday, 14th of March at 6 p.m. See you there. I'll try to answer all your queries. That's all for now. We at iExamB help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.